करके लिए थे, उसे गलने के बाद ठंडा किए और उसके ऐसे पीस निकाल कर लिए हैं। अभी हम एक बर्तन रखे हैं गैस पे, उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल को गरम करके लिए हैं और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तेल में अच्छे से अदरक लहसुन को भून कर लेंगे, उसका कच्चापन दूर होने तक। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने के बाद काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ये वाली चम्मच भर के। और 2 हमने मैगी क्यूब लिए हैं, उसको भी अच्छे से भून कर लेंगे। मैगी क्यूब अगर आपके पास नहीं है तो जो मैगी मसाला आता है वो भी ले सकते हो। और वही चम्मच से 1 चम्मच हम गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, हमारा घर का बना हुआ, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। ऐड किए हैं क्योंकि हमने मैगी क्यूब डाले थे। इस तरफ से पहले इसे फोल्ड करके लेंगे।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।